Hello, beautiful people. Welcome to my channel. This is the very first video of my YouTube channel, and I want to share my thought process behind it and मैं क्या सोच रही हूँ अभी और इससे पहले. So YouTube is like a really big platform. Okay, everyone watching, everyone on it, and मैंने सोचा कि I think I should start this. Just go for it. I know कि काफ़ी ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट होता है, लेजी फील होता है, एक डर होता है कि people are going to watch it, people are going to judge it, and also relate some people, of course, initially. But एक वो starting point is the difficult thing. Starting point is the breakthrough point. I can say that. And it's just not about the views, likes, subscribers. And I really wanted to do YouTube from a really long time. Let me just share it with you. मैंने सोचा था YouTube स्टार्ट करने का लास्ट ईयर इन द स्टार्टिंग ऑफ द लास्ट ईयर मेरे माइंड में ये एक आइडिया आया कि आई थिंक आई शुड जस्ट ट्राई इट एंड गो फॉर इट. तो मैंने सोचती रही मैं वो पूरे साल. ये साल आधा साल से ज़्यादा निकल गया है. दिस इज़ द अगस्त मंथ इन 2026. So now I have gained some motivation. I watched some videos, and like what it takes to start YouTube. It's a really big thing. For me it was, and now what I'm thinking is completely different. So last year मैं बस सोचती रही और मैंने सोचा it takes too much. काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस. यू हैव ये माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि ऑफ कोर्स पीपल विल जज यू, बट इट कैन नॉट अफेक्ट योर इनर सेल्फ इन एनी विच वे. एनी कमेंट्स और लेस व्यूज, लेस सब्सक्राइबर्स, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स, एनीथिंग. तो मैंने सोचा कि अब मैं कभी कैमरे के सामने से आई नहीं हूँ, मैंने बात नहीं की है, और मुझे पता भी नहीं कि क्या बात करनी है, क्या बोलते हैं यूट्यूब वीडियोस में. तो हाउ विल आई डू दिस, मतलब कि कब मैं स्टार्ट करूँ. और आई डोंट नो, आई लिटरली हैड वेरी intense feeling, that gut feeling to start YouTube. And the entire year just passed. Now this year, in the starting of 2026, I tried to make video and I never put it out there. It just me, okay. तो मुझे आई थिंक वो जो डर होता है, वो जो कुछ आपको होल्ड कर रहा होता है पीछे, दैट इज समथिंग यू नीड टू गेट रिड ऑफ. बिकॉज हाँ, वो डर है, वो विजिबिलिटी का, जजमेंट का, एंड दैट कॉन्फिडेंस you have to build it throughout the period, like over the period of time. So मैंने सोचा कि इस साल भी आधे से ज़्यादा साल निकल गया. एंड what to do, I didn't do. I promised myself कि ये जो gut feeling है, I'll listen to it and execute my idea on it. तो मैं बस वीडियोस ही देखती रही यूट्यूब स्टार्ट करने के लिए. मैं बस सोचती ही रही यूट्यूब स्टार्ट करने के लिए और वीडियो बनाने के लिए. बेसिकली माय फर्स्ट वीडियो कि कैसी होगी कैसी नहीं. सो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो and I literally have no idea what to do, what to talk, what to say. And literally मुझे इस वीडियो से बनाने से पहले 15 to 20 minutes I took just to set my camera. Okay, so this is the process which I get to know when I started. Okay. So yeah, but still please listen to me, stick with me. Okay. तो मैंने सोचा कि ओके, ये साल भी बीत गया, अब क्या करें. दिस इज माई रूम, एंड
देयर इज नो वन राइट नाउ, और मैं सिर्फ इसी रूम में अपना कंटेंट बना सकती हूँ, अपनी वीडियो बना सकती हूँ, अपना whatever creation I want to do, I can only do in this space now. उसके बाद मैंने सोचा कि लेट जस्ट नॉट थिंक टू मच, बिकॉज इस चीज़ में, इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए कैमरा सेट करना सीखना पड़ेगा, एडिटिंग सीखनी पड़ेगी, विच इज़ अ वेरी बिग टास्क, और उसके लिए टाइम भी चाहिए. बोलना सीखना पड़ेगा कॉन्फिडेंटली, एंड यू डोंट हैव टू थिंक टू मच इनिशियली कि क्या बोलना है, क्या करना है, एंड यू जस्ट नीड टू स्टार्ट इट. और ये सब मैंने वीडियोस में देखा. तो बेसिकली ओवरऑल मैंने ज़्यादा इस बार नहीं सोचा, कुछ भी नहीं सोचा, एंड आई जस्ट ओपन माई कैमरा, गॉट रेडी एंड started talking. I literally have no idea what to say still now. This is what's going on in my mind right now, okay? So, if you literally have gut feeling to start creating content, to just put yourself out there, to just show up online, do not think too much. Do not think too much. Like from here, you have to बी वेरी क्लियर. लाइक ब्लाइंडर्स लग जाने चाहिए इस टाइम पे कि अब मुझे अगर स्टार्ट करना है तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं सोचना है. एंड आई लिटरली हैव स्टिल नो कॉन्फिडेंस, नो एक्सपीरियंस, being in front of camera, talking to people, saying it what's on my mind, and just be myself. Okay. So yeah, this was my thought process. और अब मुझे लग रहा है कि it was all worth it. because अब मुझे एडिटिंग भी सीखनी पड़ेगी. Of course it's a process, so I have to flow with it, and it's a self motivation game. Okay, तो ये जो मोटिवेशन है ये खुद से ही आता है, चाहे आप जितनी मर्जी वीडियोस देखो. ओके, सो बहुत सारी ज्ञान बांटने वाली बातें करती हूँ मैं वैसे, लेकिन हाँ, ये मेरी फर्स्ट यूट्यूब वीडियो है, एंड आई डोंट नो इस पर 0 व्यूज़ आएंगे, 3 व्यूज़ आएंगे, 100 व्यूज़ आएंगे, आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया, बट आई रियली वॉन्टेड टू डू इट, एंड आई एम डूइंग इट, सो आई एम हैप्पी, एंड आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, because I have this gut feeling, I have this idea in my mind for a really long period of time, and yeah, I really wanted to share my thought process behind starting the YouTube. This was it, because मुझे लगा नहीं था कि मैं कभी लाइफ में ऐसा कुछ करूँगी, लाइक वीडियो बनाऊँगी यूट्यूब पे. सो या and I still don't know what to say. But basically it's just you and your camera and your room, and yeah, this is what I am experiencing right now. Well, by the way, apart from it, मैंने ये YouTube चैनल स्टार्ट किया है just for myself as of now. I really wanted to start it, and I did it, and I'm doing it. तो ऐसे मुझे कुछ स्क्रिप्ट वगैरह नहीं चाहिए. आई एम वेरी वेरी like lazy, and I'm not into that scripting part and all of that, read that script and say it out loud in front of camera. No, I just want to be myself. Whatever comes out from my mind in that moment, I do it. तो ये मैंने सोचा कि अगर मैं स्टार्ट करूँगी तो आई शो व्हाट आई एम, व्हाट ट्रूली आई एम, नॉट जस्ट स्क्रिप्टेड और चैट जीपीटी का कुछ देख के या कुछ लाइंस बोल के, कोट्स बोल के. नो, आई डोंट वांट टू दैट. दिस इज द रॉ मी, एंड दिस इज द genuine feeling. So yeah, it just, I started.
and I'm glad that I'm started. I don't know how it will go. I really have no idea uh, कि आगे मैं क्या वीडियोस बनाऊंगी. But yeah, it would be on my lifestyle, day to day life, my routines, and what I'm doing, what I'm up to. This is gonna be like my own life. So I really don't want to niche down anything, and I'm not into it because I have been a corporate girl and I have left my corporate life. Now I have few clients, I have switched my career, and yeah, this is what I'm, and I'll make another video, entire another video on my career, so that would be a separate video. But as of now, I am not a corporate girl anymore. I have left that, and I really don't want to follow any rule as of now because I have been doing that. I have been doing that for more than like 7 years, I would say. Yeah, so when I was 18 plus, I started working, and it just I thought कि मेरे वो सारे साल waste हो गए, but नहीं, वो learning थी, and I have learned a lot, and I'm glad, I'm proud of me that I experienced that. Okay, because life taught me that, and yeah, it was my journey completely, and it is still my journey. So I'm the author, I'm the writer of my story. Okay. So yeah, this is it. I hope कि आप सुनो अपनी गट फीलिंग को, और जो भी आपके माइंड में आइडिया आ रहा है और वो इतना इंटेंस है, इतना डीप है कि you cannot think any other thought right and left apart from that one idea, क्योंकि वो दिन रात आपके गट फीलिंग को ऐसे ही पहचानते हैं कि वो डे इन डे आउट आपके दिमाग में रहे, एंड जब तक आप उस पर काम नहीं करते तब तक वो आइडिया यू नो तब तक वो आइडिया वहीं रहता है, स्टक रहता है, वो एक स्टक एनर्जी की तरह दिमाग में ही घूमता रहता है. So that you have to listen to it. Okay, note it down. You have to listen to it and start executing, start planning or idea or whatever you want to do. Take actions towards it. So yeah, I started this, and I hope कि आप भी जो भी ये देख रहे हैं अपनी गट फीलिंग को सुनो, and whatever it says to you, you just go for it without a second thought, without overthinking. I know at times overthinking होती है, you have to procrastinate, feel lazy, and पूरा प्रोसेस आपको इतना ओवरवेलम करता है कि आप कोई एक्शन ले ही नहीं पाते, एंड दिस इज व्हाट आई वाज डूइंग. तो ये है मेरी फर्स्ट वीडियो, एंड आई पुट इट आउट देयर एज इट इज. ओके, I also not into too much editing, heavy editing, or too much like क्या कहते हैं उसको, I don't know that word, but yeah, heavy editing kind of thing is not my style. So I still, the kind of content I watch really raw and genuine content, which is not including very high heavy editing. So this is me, and मुझे भी heavy editing पसंद नहीं है ना, मुझे editing आती है, तो I do whatever I want to do, but yeah, it would be a genuine, a raw me and nothing else. So this is what it is, and if you are watching this video and thinking that I should also start, I should also do this, I had this kind of idea, I had this kind of plan, I really wanted to do that, this video is your sign. Specifically, it is your sign to just go for it. भले ही वो उससे कोई ज़ीरो आउटकम आए, आपको ज़ीरो बेनिफिट हो, कुछ ना ही हो, कुछ भी नहीं हो उस आइडिया का, बट आप एग्जीक्यूट करोगे एंड यू विल फील
confident, you start believing in yourself more and more and more, and you know it gives so much confidence. So yeah, ये आपका साइन है. प्लीज अगर कोई भी आइडिया आपके दिमाग में, यू नो, टू जस्ट स्टार्ट अ ब्रांड, टू स्टार्ट योर पर्सनल ब्रांड और अ स्टार्टअप, launch that product, launch that website, start making content, whatever it is, go for it, go for it. So yeah, and I hope you like this video because this is my first video, so I was nervous before making that. The moment I start the camera, I am on it. Okay, so yeah, um, I hope you like this video, and this is your sign to start whatever your heart is calling out. And yeah, start believing in yourself, and it gives you so much confidence even when you take one small step towards it. That's it. Okay, so I hope you like this video, and please, please, please subscribe my channel, like, share, and comment. Comment, please. Your raw comment. You know, I don't like judging comments. Of course, if someone wants to judge, it's their choice. But just I want to know what people are up to, you know, because really, if you see beauty in everything, it means you are beautiful. If you see something judging or something, you know, not too good, uh, even if you don't want that, just do not watch that. That's my opinion. Okay, if you are not into it, do not waste your time in it. So yeah, if you see beauty in everything, in nature, in world, in this universe, then of course you are so beautiful. There is no doubt about it. So please comment, like, share, subscribe, and tell me how you are feeling. And yeah, what you are going to start. If you are going to start something, then please comment on this video. I'll see you in my next video. And yeah, I'm so happy I started this. So I'll see you in my next video, and tab tak ke liye, take care of yourself and start watching my videos. Love you all. Bye bye.